Recording. Now see, basically whenever we have started with the ETL, this is the syllabus what has been defined. The ETL, that is extract, transform and load. What exactly it is implementing, that is most important for us. So the basic theoretical concept what we need to understand is what is exactly the ETL is. One more thing that we need to understand is the data extraction methods, how we can extract a method from various sources. And the second important thing is that data loading techniques. Now these two things are the, as far as this ETL tools are concerned, these are the most crucial things that we need to understand. So today's session I will be focusing on these two parts, and the tools also we will be talking about the tools which are actually available in industry nowadays. So this is the only one thing that I am expecting in today's session. Okay, are you clear? Shall we move further for the content now? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now I have already told you that the huge openings are there as far as the ETL nowadays is concerned. Okay. So basically the extraction process we need to know what is exactly. The E starts for extraction. Now the first thing that is extract and then transform and then load. So E is the process of extraction, and whenever we go for extracting a data, you will find the data warehouses, the tools which are working on the extraction, they will be working on different data sources and different databases. And how this data is being stored, there are different formats available in the market. So usually whenever extraction is done from various sources. One source will be the database, second one will be the flat files. Now what are the flat files? We can say that these are the what we call as Excel sheets or your PDFs, that is called as the flat files. Okay, then one more format of input is your XML files, because XML files contains a data in a very precise and systematic way. Okay, then JSON file, that is nowadays basically lot many data has been converted into JSON, so JSON format is also there. Some APIs are also ready-made APIs are there, that is application program interfaces, that will be providing an input for your process of extraction. So extraction will be done by the tools basically, and whenever we are working with the process of extraction, you will find there is some workflow. We call it as ETL workflow. So the workflow will be working, and we will be extracting data. So what is that workflow? Basically the name of the workflow which is working is called as bright flow. Okay, and that is basically the bright flow is BRYTE, bright flow, and basically it is for AWS ETL. Means what? Nowadays the data we are founding it on clouds. So bright flow is a technique where we can retrieve the data, and we can get that data repository, and we can do some analysis on it using some flow that is called as a bright flow. So why it is important to go for extraction? Because you will see extraction is for the purpose of we have a data in rows and column. So for getting those big data and making some decision, that is the main intention why we go for extraction. Okay, so decision making for the sake of sales, what is exactly trending, आपके मार्केट, आपके जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से ट्रेंडिंग हो रहा है. You can get the sources of your customer also. You can get a customer service enhancement, किस तरीके से आप कस्टमर की सर्विसेज को enhance कर सकते हैं. Now this data can help us in medical researches also. Nowadays the medical history can help us to get the correct diagnosis in future. So medical research is also there. We can get, and machine learning, nowadays the trending thing is that machine learning requires data, because you will be generating some concluded what you call as a solution based on the previous data. So machine learning is again required some AI, that is artificial intelligence, again this requires some data. So the basic intention of data extraction is nothing but the upcoming trending, that is whether it is machine learning or artificial intelligence or your medical research, everywhere you will find the data will be required, and that is the reason why we require first the data need to be extracted, that is already stored into your databases. Are you clear? Yes or no? Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay. What about remaining students? Rohini, Snehal?
ममता? Yes, sir. Okay. Shabnam? Yes, sir. Vidya is also there. Now see, whenever we are working with this tool, this I am again telling you, this is the very is the upcoming trending and future is basically on this one. So what to keep in mind when preparing for data extraction? तो अगर हमने इस सेक्टर में अगर काम करना सोचे तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए एज एन डेवलपर और एज एन ETL, what we call as a tool user or ETL developer, we call it as ETL developer basically. Now हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? Now first thing is that you need to know the impact on the source. So whenever you are working, so what will be the impact on the sources? So first ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है. Second one, the volume of data, कितना डेटा आपको लगने वाला है for the purpose of analysis. So extraction के टाइम पे कितने डेटा के ऊपर काम करने वाले, 10 मिलियन रिकॉर्ड्स और 20 मिलियन रिकॉर्ड्स, यू शुड बी वेरी मच प्रिसाइज कि मुझे कौन से डेटा, कितना वॉल्यूम के डेटा के ऊपर एनालिसिस करना है. मेरा सोर्स कौन है, इम्पैक्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ माय सोर्स, वो कौन है जिसके ऊपर, कौन से डेटा के ऊपर मुझे काम करना है, XML फाइल के ऊपर काम करना है, JSON फाइल के ऊपर काम करना है, वेदर आई वांट टू वर्क ऑन सम डेटाबेस और ऑन सम फाइल्स. सो व्हाट इज दैट सोर्स, ये इंपोर्ट इम्पैक्ट क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है. थर्ड वन, डेटा कंप्लीटनेस, क्या मैं जो डेटा एक्सट्रैक्ट करने वाला वो कंप्लीट डेटा है कि नहीं, ऑन दैट बेसिस कैन आई मेक सम डिसीजन. So as an ETL developer, whenever you are extracting a data, some questions, some answers should be there in front of you. The data quality, the volume of data and the completeness of a data. ये तीन चीज़ें आपको अगर पता होंगी, then only you can be a good data analyst. Now, whenever we are working with some data, data extraction, automated data extraction means what? The process is actually done automatically. Now physically you are not doing anything. These are the tools which are available in the market that will be retrieving the data into your database. So whenever you are retrieving the data from the database into your processing of into your ETL tool, you will be following the bright flow. This is the name of flow that will be followed, that is automated, and it will be working on heavy datas. Okay, so whenever you are retrieving the data, you will find the technique called as a bright flow technique can do all the thinking and planning. You don't need to think what is and how to retrieve it. So everything will be done, but what is required by you is that you need to know, you need to understand the process of data warehouse ETL. ये आपको पता होना चाहिए. And whenever you are working on this, you should know what is structured and what is semi-structured sources which are available. Okay, so what is, are you retrieving data from cloud? हम क्लाउड से डेटा रिट्राइव कर रहे हैं क्या, कोई डेटा लेक से डेटा रिट्राइव कर रहे, डेटा लेक मतलब क्या, डेटा बेसिस है ना, कोई डेटाबेस से हम रिट्राइव करें कि डेटा वेयरहाउस के क्लाउड से हम डेटा रिट्राइव करें, ये पता होना बहुत ज़रूरी है. ऑन दैट पैरामीटर ओनली द ब्राइट फ्लो विल बी थिंकिंग एंड इट विल बी प्लानिंग. Now whenever you are doing some extraction, there are type of data extraction अलग अलग तरीके से. If you are working on cloud, the extraction will be somewhat different. If you are working on data sources like databases like MySQL or Oracle, your data extraction techniques will be different. So types of data where extraction, ये पता होना बहुत ज़रूरी है. Now this is the most important part as the syllabus is concerned. What are the types of data extraction? So basically there are only two types of data extraction. I am highlighting with some new color. Okay, so there are only two types of data extraction. Number one, we call it as logical data extraction, and second one is called as a physical data extraction. Are you clear with this? There are two types of extraction you can do. One will be the logical and second one will be the physical. Are you clear with this? रेडीमेड डेटा जो हम वर्कआउट करने वाले हैं क्लाउड और डेटा बेसिस के ऊपर, तो हम किस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं. वन विल बी द लॉजिकल एक्सट्रैक्शन, सेकंड विल बी द फिजिकल एक्सट्रैक्शन. इज देयर क्लियर रोहिणी, स्नेहल? Yes, sir. ओके, पूजा, आर यू गेटिंग? ममता? Yes, sir. ओके. नाउ what is exactly the logical extraction? Now ये word logical, physical, ये जो नाम है हमें ये सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है. Now what is logical? The most commonly used data extraction. मैं फिर से बता रहा हूँ, this is the most commonly used data extraction method. That method is called as a logical extraction. Most commonly. Now ये logical extraction is again being categorized into two categories.
टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में उसको सब डिवाइड किया है. वन इज फुल एक्सट्रैक्शन एंड वन अदर इज इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन. फुल एक्सट्रैक्शन, नाउ सी लॉजिकल एक्सट्रैक्शन मतलब क्या, डेटाबेस में से टेम्पररी डेटा आप लेके आ रहे हैं. इट्स जस्ट लॉजिकल. जैसे जावा की प्रोग्रामिंग में वेन एवर यू आर वर्किंग विद अ डेटाबेस और लाइक माई एसक्यूएल, यू आर रिजल्ट सेट से हम कोई सिलेक्ट की क्वेरी जब फायर करते हैं तो हम डेटाबेस में से टेम्पररी आपके जावा के कोड के अंदर लाते हैं और उसको आपके कंसोल या फिर वेब के ऊपर दिखाते हैं. बराबर है कि नहीं? इज द एक्चुअल डेटा कमिंग फ्रॉम डेटाबेस? क्या उसकी जेरोक्स आ रही है? क्या लग रहा है आपने उसके वहां से लेके आ रहे हैं? मतलब क्या परमानेंटली यू आर ट्रांसफरिंग अ डेटा? आर यू परमानेंटली ट्रांसफरिंग अ डेटा फ्रॉम डेटाबेस इनटू योर जावा प्रोग्रामिंग? यस और नो? परमानेंटली डेटा रिट्राइव कर रहे हैं, क्या टेम्पररी डेटा रिट्राइव कर रहे हैं? क्या एक्चुअल डेटा हमारा वहां पर ही रहेगा? क्या नहीं रहता है वहां पर? यस, आई वांट आंसर. यस, एनीवन? Shabnam, whether the data will be transferred permanently from database into your Java programming और उसकी सिर्फ एक जेरोक्स कॉपी जिसको हम रिजल्ट सेट बोलते हैं वो आता है. व्हाट डू यू थिंक? टेम्पररी. टेम्पररी आता है. ओके, नाउ दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज लॉजिकल एक्सट्रैक्शन. ओके, तो लॉजिकल जब भी आप डेटा रिट्राइव करेंगे आपके कुछ रिपोर्ट्स बनाने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्शन, फुल एक्सट्रैक्शन एंड इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन, ये दो तरीके होते हैं ना. फुल एक्सट्रैक्शन मतलब क्या, जितना भी डेटा है आपके पास, सपोज आपके पास एक कुछ फाइल है, सो बेसिकली फुल एक्सट्रैक्शन आपको फ्लैट फाइल की तरफ से होता है. फ्लैट फाइल मतलब क्या, अगर आपके पास कोई एक्सेल शीट होंगे तो पूरा डेटा एक्सेल शीट से आप रिट्राइव कर सकते उसमें से पूरा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी इन एक्सेल शीट, सो लिमिटेड रिकॉर्ड विल बी देयर. कोई पीडीएफ में होगा तो उसको आप डायरेक्टली रिट्राइव करते. द फुल एक्सट्रैक्शन मेथड इज डेटा इज कंप्लीटली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स. ये ध्यान में रखना, इट इज कंप्लीटली एक्सट्रैक्टेड. पूरा डेटा जितना भी कुछ उस डेटाबेस में होगा, जितना भी कुछ उस फ्लैट फाइल में होगा, तो पूरा डेटा, पूरा रिकॉर्ड उसमें, इफ इट हैज अ 10 मिलियन रिकॉर्ड्स, ऑल 10 मिलियन रिकॉर्ड्स विल बी कमिंग इनटू योर the ETL tools. So this is called as a full extraction. And second one is incremental extraction. मतलब क्या कि बहुत जगह पर ऐसा होता है कि whenever most of the database you will find कि data is already getting updated, continuously data उसके अंदर update होता है, उसके अंदर आ जाता है. So incremental मतलब क्या, after every interval the data will be refreshed and it will be reloaded. Automatically the reloaded and application will be done. Now this is called as a technique called a trigger. So if there is anything updated into the database, automatically it will be reloaded into the ETL tool. This is called as a लॉजिकल एक्सट्रैक्शन. आर यू क्लियर विद दिस लॉजिकल एक्सट्रैक्शन? दो तरीके से होता है लॉजिकल. एक तो फुल डेटा आ जाता है और दूसरा फुल आने के बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ टाइम के बाद डेटा अपडेट होता है तो वो भी आपको अपडेटेड डेटा भी कंटिन्यूसली चाहिए. जैसे क्लाउड के ऊपर आप हमेशा देखेंगे डेटा इज ऑलरेडी गेटिंग अपलोडेड एंड अगेन इट इज गेटिंग अपडेटेड फ्रीक्वेंटली. सेम थिंग इज हैपनिंग विद इंक्रीमेंटल. You will find that incremental extraction will be incrementing a data at every timestamp. एट एवरी टाइम स्टैम्प. ये जो टूल्स मार्केट में अवेलेबल है ये हर डेटा को 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद अपडेट करते, अपग्रेड करते, अपडेट करते और अपडेट होने के बाद ऑटोमेटिकली रिफ्रेश डेटा जो हुआ है, डेटा जो अपडेट हुआ है, ऑटोमेटिकली इट इज गेटिंग लोडेड कंटिन्यूसली. इट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन. आर यू क्लियर विद दिस लॉजिकल एक्सट्रैक्शन नाउ? यस और नो? Yes, sir. Okay. Now second is physical. Now what is physical? Now physical extraction again दो तरीके से होता है. One is online and one is offline extraction. ये दोनों ध्यान में नाम रखना है. What is online and what is offline? Now online extraction मतलब क्या? In the process, the extraction process directly connected to the source system and extract the data from the data sources. So it is physically connected. Physically connected. As soon as the data get updated, physically immediately it will be loaded. It will not take time. जैसे यहाँ पर हम टाइम स्टैम्प यूज करते हैं 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 24 घंटे बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, आवरली, टाइम स्टैम्प इज गिवन. बट देयर इज नो टाइम स्टैम्प. इट इज ऑनलाइन. जैसे आपको चेंज करेंगे, जस्ट लाइक शेयर मार्केट यू विल फाइंड, जैसे आप कोई डेटा चेंज कर देते हैं इमीडिएटली दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग. दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल एक्सट्रैक्शन. वी कॉल इट एज एन ऑनलाइन एक्सट्रैक्शन. बेसिकली इट इज वर्किंग ऑन क्लाउड्स.
data warehouses which are working on cloud. Automatically you are doing some changes in your database, it will be uploaded on cloud, and cloud will be making changes immediately into your ETL tool. Are you getting what is online extraction now? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes. ओके ना ऑफलाइन एक्सट्रैक्शन, अभी ये ऑफलाइन एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, डेटा दैट इज नॉट एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली, बहुत डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं किया था फ्रॉम डेटा सोर्स, बट इट इज टैग्ड explicitly outside the original data sources. So you cannot consider the following common structure in on offline extraction. मतलब क्या, offline extraction में ये data एक बार आने के बाद it may take some time for updating. So flat files you will find it is offline. एक बार flat file बन चुकी है, it is dump files, that is database specific files, ये भी offline ही extract की जाती है. Remote extraction from data log sheet में से data extract करना. So these are all offline extraction, and you will find there are zero impact on the source system and its performance. इससे आपके source के ऊपर zero impact होता है because it is not directly connected. Whereas in online extraction you will find it is dependent upon the database, so it is having a full impact on your performance, but there is no impact on your performance. And whenever you are working with the offline extraction, the extracted data is loaded into distinct that service of platform. You will find this type of technique, that is offline extraction, is basically done in artificial intelligence, machine learning and BI. आज के ज़माने में यही चीज़ों को यूज़ किया जाता है. दैट इज़ नथिंग बट योर ऑफलाइन एक्सट्रैक्शन. ऑनलाइन एक्सट्रैक्शन के ऊपर रिपोर्ट टेम्पररी बन जाते हैं बिकॉज इट इज़ ऑलवेज बीन चेंजिंग, सो यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन इमीजिएटली. ओके, बट ऑफलाइन एक्सट्रैक्शन इज डेटा यू हैज फाइनलाइज और उसके ऊपर यू आर मेकिंग सम एनालिसिस. So artificial intelligence, machine learning and business intelligence, all reporting is basically dependent upon your offline extraction. And the tools, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि the tools which are available in market are Amazon Redshift, ये tool है जो काम करता है आपके offline extraction के ऊपर. Azure SQL data warehouses, that is again working on this. Snowflake is again working on the offline extraction. So are you getting? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now data extraction with change data capture. Okay, with change data capture. So you बहुत जगह पर ऐसा होता है कि डेटा यू नीड टू रिफ्रेश, हर बार डेटा को रिफ्रेश होना बहुत ज़रूरी है. सो चेंज डेटा कैप्चर यू नीड टू मेक अ डिसीजन कि आपकी जो डेटा माइनिंग का जो प्रोसेस है, वेदर इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द रिफ्रेश डेटा और इट इज़ नॉट डिपेंड. सो इफ़ इट इज़ डिपेंडेंट, अगर आपको फ्रेश डेटा के ऊपर ही डिसीजन लेना है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज वेदर वी आर गेटिंग अ रियल टाइम डेटा, वेदर वी आर गेटिंग ऑन टाइम डेटा, सपोर्ट फ्रॉम डेटा वेयर हाउसेज. तो ये चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस करता है. सो चेंज डेटा कैप्चर मीन्स व्हाट, वेन एवर यू आर वर्किंग विद द ऑनलाइन डेटा, वी नीड टू एंश्योर द रियल टाइम डेटा, we need to work on the refreshment of the data, and we need to work on time data warehousing, whether it is supporting or not. And you will find there are various databases like SAP and Oracle which are working on change data capture, on change data capture. So these are the two tools, SAP and Oracle, that is working on changing data capture. It is capturing and it is bringing a real time, on time data for your analysis. So are you clear with this one? Change data capture in data extraction. Yes? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Then automated data extraction with this one. This is automated. यानी मतलब जो बोल रहा हूँ, मैंने बोल रहा हूँ ना, आज के ज़माने में जो चल रहा है, that is automated. So if you are using this bright flow, and that is nothing but automated data extraction, manually you don't need to do, the tool will be doing for you. So whenever you are using this one, okay, so what will be the benefits? So zero impact on source will be there. If you are using the tools, perfect tools of data warehouses, there will be zero impact on data source. There will be high performance because it is multi-threaded. There will be zero coding because it is already connected, the tool. The support for terabytes of data integration, both initial and incremental. So you will be working on data that is incremental and that is initialized. So the tools that is following with bright flow will be helping us to get lot many things. Thanks many time service
So you will be getting a time services, and it is self recovery, because database need to have a backend that is recovery of your data. So it should not get that it is you are linking the data or you are dropping the data at some situation. So self recovery is also been required in most precise way. Smart checkup features whether the process is working excellently or not, and CDC with transaction log representation. So who is working with what, that is log sheets. Okay, so log will be maintained, and that will be helping us to do this one. So everything that is automated data extraction nowadays been initiated, and it checks data completeness also. It is going for checking the data completeness also, because your decision is only depend upon the complete data and unlinked data. So the tools which are available, जैसे मैंने बोला कि मार्केट में अंदर SAP is working, Oracle is working, SQL Server is working, MySQL, then your S3, your Redshift, your Snowflake, okay, Azure, Snap, SQL Server. So these are all databases which we are supporting, and which will be giving you an automated data extraction tools. So these tools are available with all the companies, and you can use this. So bright flow is what we call is one of the heart of data warehouse ETL tool. So you just keep in mind the bright flow, this is the only flow that will be helping us in data extraction. Okay, and it is the most secure. Nowadays it is implemented by all the products, जैसे मैंने बोला SAP, Oracle हो या SQL हो या MySQL हो या फिर Snowflake हो या फिर Azure हो या Redshift हो या SQL Server हो आपके Microsoft का, everywhere you will find the bright flow security is being provided, and it is helping us to extract the data from your data warehouses through ETL process. So are you clear with this one? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. ओके, नाउ एक्सट्रैक्ट होने के बाद मैं बोलता हूँ जब भी आप डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी उसमें से अननेसेसरी डेटा को आप रिमूव करेंगे, एंड नाउ इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस. तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा उसको लोड. तो देर इज टूल्स, ये टूल्स जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन टूल, दैट विल बी लोडिंग द डेटा एंड दैट विल बी हेल्पिंग अस फॉर जनरेटिंग द रिपोर्ट्स. सो आई विल जस्ट गो फॉर दिस डायग्राम वेरी प्रिसाइजली. ये डायग्राम ही पूरा चीज़ों को हमें बताएगा. ओके, सो सी दिस वन. I think this is visible to everybody now. Yes? Okay, ये diagram सबको visible है? Okay. Yes, Now, sir. on left hand side, you will see that is the data sources. So it can be a database or flat file or anything. Now this whole data is transformed. This is exact cleaning and transformation and load refreshment. So this is the wall that is connecting your data sources with your warehouses and with your mining. Now at the bottom you see this is data source, this is data storage, temporary data storage, this is OLAP engine, and this is front end tool, the tools which is doing your analysis. So you are extracting the data from different data sources, it is been extracted, it is transformed, it is cleaned, and it is now loaded into data warehouses. Now data warehouse will be storing the data, and this data warehouses will be storing a data into different formats. We call it as metadata. Okay, we call it as a data marts. So data is stored in the metadata format and in data mart. So data mart will be containing the actual data, and data metadata will be containing the rows and column description, the data types of your column, everything will be stored in metadata, and there will be a complete storage. And after storage there will be some OLAP engines, जो हम बोलते हैं आपके जो टूल्स जो है, the tools will be working on your data mars, the tools will be working on your data warehouses, and it will be extracting the data. We call as the data server, we call as OLAP engines, we call as OLAP servers. ये server आपको serve करेंगे data ये tool को. Now this tool is front end tool, and this tool will be helping us to extract the data and generate the reports, and that is called as data mining. And this is nothing but the total process of ETL. Extraction is there, transformation is there, and loading is there into your OLAP server. Okay, are you clear with this one? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. What about remaining? Extract मतलब क्या?
एक्सट्रैक्ट भी कर रहे अलग अलग डेटाबेस में से, स्टोर कर रहे, स्टोर करने के बाद उसको सिर्फ स्टोर नहीं कर रहे, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे, अननेसेसरी डेटा को आपको जो नहीं चाहिए वो आपको उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे, एंड उसके बाद आप उसको लोड कर रहे विद हेल्प ऑफ OLAP सर्वर। यही जो क्यूब होते, इनको हम बोलते क्यूब भी बोलते, कब जगह पर उसको सर्वर भी बोलते। नाउ दिस क्यूब विल बी हैविंग योर लॉजिक एंड दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सर्विस एंड यू कैन सर्व दिस टू द टूल। नाउ वेन एवर यू आर वर्किंग विद द ETL, ध्यान में रखना, वेन एवर यू आर वर्किंग विद ETL, द थ्री ऑपरेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड, वन इज एक्सट्रैक्शन, here this is extraction, then there is a transformation, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पहली बार भी पिछली बार भी बताया, यू आर कन्वर्टिंग द डेटा इनटू अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, एंड लास्ट वन इज लोडिंग, मतलब क्या, यू आर इंपोर्टिंग द ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू लार्ज डेटा बेसिस फॉर डेटा वेयर हाउसेस। नाउ व्हाट इज अ बेनिफिट, अगर ये टूल्स लेके हमें फायदा क्या है आज के ज़माने में, इट विल एनहांस द बिजनेस इंटेलिजेंस, BI, business intelligence, you can take a decision. Second one, you can increase the query and system performance with using this ETL tools. Timely access of data, timely access to the data, what is exactly happening, इससे हम क्या decision ले सकते हैं, enhance quality and consistency and high return on investment, you will ensure high return. You will see currently कोविड की जो टेस्ट की सिचुएशन है कि इससे कल जाके आप प्रेडिक्ट कर सकते कि ये जो थर्ड वेव है, फोर्थ वेव कब आएंगी, थर्ड वेव कब खत्म हो जाएंगी, everything can be done, this analysis can be done with the help of the tools, and this is one thing you have to keep in mind. So what is loading, I have already told you, the extract transform loading is loading the whole data into the your tools. These tools are called as the front end tools. Now we'll talk about the tools. Whenever we are loading, initial load, इंक्रीमेंटल लोड, जी हमने पहले ही बोला कि इनिशियल लोड मतलब इनिशियली फर्स्ट टाइम द लोडिंग विल बी डन। सेकंड वन, एज एंड व्हेन द डेटा इज गेटिंग चेंज इट विल बी लोडेड, वी कॉल इट एज इंक्रीमेंटल लोड। एंड थर्ड वन जो होता है कि दैट इज फुल रिफ्रेश, यानी पूरे डेटा को रिफ्रेश। सो वेन एवर यू आर लोडिंग द डेटा into your data warehouses, whenever you are loading a data into data warehouses, तीन तरीके से होता है। वो फर्स्ट होता है इनिशियल लोड, यानी आपको आपके पास जो डेटा है उसको आप लोड कर रहे हैं। सेकंड होता है इंक्रीमेंटल, यानी जो डेटा लोड हो रहा है वो इंक्रीमेंट और कुछ टाइम स्पैन के साथ लोड होता है। एंड थर्ड वन इज फुल रिफ्रेश आफ्टर एवरी मिनट, जस्ट लाइक वेन एवर यू आर गोइंग फॉर पेज रिफ्रेश, उसी तरीके से पूरा डेटाबेस ऑटोमेटिकली आफ्टर 24 आवर्स विल बी गेटिंग रिफ्रेश। दिस इज द three techniques which are been followed into your loading process. Okay, are you clear with this one? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay. नाउ जब भी आप लोड करते हैं ये पूरा डेटा डेटा वेयरहाउस में, ये तीन तरीके से होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डायमेंशन टेबल्स। लोडिंग इज ऑलवेज डन इनटू योर टेबल्स। आप लॉजिकल डेटा लेके आ रहे हैं, उसको स्टक रखने के लिए आपके पास ही टेबल होना चाहिए। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। These are the three types of changes which will be carried out into dimensional table. Now what is dimensional table? अब ये एक डायग्राम में दिखाता हूँ। The dimensional table, the data sources will be transformed into and prepared into the load. Now see, it has been loaded into three different types. Okay, type 1 will be the override old values. Type 2 will be creating a new dimensional records, and third one will be the push down changes. Okay, जैसे मैंने तीन बोला कि initial data load, इंक्रीमेंटल लोड एंड फुल फ्रेश, मतलब क्या, पहला वाला डेटा, इंक्रीमेंटेड डेटा एंड फुल फ्रेश डेटा। सो इन थ्री वेज द डेटा विल बी वर्किंग इनटू द टूल्स। ओके, नाउ लोडिंग ऑपरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस एंड हियर द मेथड्स ऑफ लोडिंग कैन बी डन इन थ्री वेज। तीन तरीके से हम लोड करते हैं, वन इज क्लाउड बेस्ड, वन इज बैच प्रोसेस एंड वन इज ओपन सोर्स। सो यू कैन लोड अ डेटा into data warehouse from three different locations. एक तो क्लाउड में से आप डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, एक बैच में से कर सकते हैं। बैच मतलब क्या, Oracle or something like you have already your softwares that will be containing data into your tables, so you will be retrieving it from batches. And third one is open sources, just like MySQL or some other open sources files, you can access it. Now the tools which are working and which is booming in the market nowadays, you need to understand the name of the tools and you just go for getting or investigation getting or just read something.
you will be finding the huge opening is going on the people who are very much precise about the tools which are there in the market. ये tools जिसको आते हैं 100% these people are getting handsome amount of salary. Now one is Informatica. This is one of the product जो आज के ज़माने में you will just search it, you will find the huge opening. One is IBM product called as a InfoSpace information server. Sprinkle is also working in market nowadays. Sky via Erie, Veracity. Now these are DB convert, but Informatica India में थोड़ा ज़्यादा workout होता है. Sprink and Informatica, and one is IBM. But now this is proprietary, so that is not that much important. But Informatica is one of the best tool nowadays working on the ETL. Okay, so if you want a career, you can do the career in the ETL as a ETL developer also. उसके लिए आपको Informatica Oracle base डेटाबेस का एसक्यूएल पक्का होना चाहिए और उसके ऊपर एक टूल जो वर्कआउट होता है दैट इज इन्फॉर्मेटिक. ये अगर आपके पास होगा तो यू विल बी एक्सपर्ट इन द कमिंग डेज. एंड लास्ट आई वांट टू कंक्लूड अबाउट दिस चैप्टर. ये और भी कुछ डेटाबेसेस आपको पता होना चाहिए. देयर इज वन इज ओरेकल डेटा इंटीग्रेटर एंड वन इज माइक्रोसॉफ्ट जो आज के ज़माने में जिसको हम बोलते हैं SSIS दैट इज एसक्यूएल सर्वर इंटीग्रेशन. दिस इज प्रोप्राइटरी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, सो इसके थोड़े से कम ओपनिंग्स होते हैं. ओके, and this AB initio. So the Oracle भी थोड़ा चलता है because it is again some part is open source. Oracle के बाद Microsoft SSIS is also there. You can use it. Okay. Now I want to conclude this chapter with some limited part that is data loading challenges. जब भी आप data load करेंगे आपके डेटाबेस में आपके सामने कुछ challenges आएंगे. वो challenges क्या है? Slow down analysis. Now numeric ETL solutions are working on cloud based. Now ये इसके सबसे बड़े चैलेंज आपके सामने है कि आज के ज़माने में maximum data you will found it on cloud. And what is the responsibility for there is whenever you are working with the cloud, your responsibility is concerned about the speed and scalability. So ये दो चीज़ें जो है अगर आपके होंगे प्रिसाइज तभी जाके आप you can be a good product. Your product just like Informatica or IBM will be efficient. ये tools ने दो चीज़ों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने. एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके क्लाउड के डेटा के ऊपर, बिकॉज cloud data is refreshing continuously and it is very speedily it is getting updated. Now you need to match your tool speed with this cloud and the scalability of the cloud with your tools, तभी जाके आप efficiently आपका data mining कर सकते. So the best large enterprises with traditional or non-primitive infrastructure or data management process often use a customer built scripts to control the load. So people need to write some scripting logic, so this logic will be retrieving the scalable data on the speed wise data into your database. So this is the first challenge, and whenever you are working the slow down analysis, you have to analyze the speed of your tool, whether it is working perfectly or not. You need to increase the likelihood of your error. जितने भी एरर आ जाएंगे you need to handle those error very efficiently because every day new type of errors will be coming in front of you. Third one is you need to require a specialized knowledge. Without knowledge of databases you cannot work with the ETL tools or ETL task. And last one, you should require the costly equipments. So there are huge equipments. You will find the Oracle different flavors are there. They are costlier, and for giving a best performance and speed you need to go for those products, then only your customer will be satisfied. And for that what is required is that huge hardware setup, huge RAMs, huge processors are required for the huge data. So the more the data, the more efficient hardwares and the more efficient what we call as tools you will be required in the upcoming days. So these are all challenges in front of you in the coming days. Okay, so the more the data, the more will be your electronic, the hardware devices should be efficient, otherwise it will never work. Okay, so are you clear with the content of this chapter now? Have we covered everything? क्या लगता है सब कवर हुआ क्या नहीं? This is the first part which we have covered, and this is the ETL second part of the chapter number 3, and the weightage is 20%. I want to tell you it is percentage 20 percentile, means 10 to 15 marks question will be on this chapter. Any doubts as far as this chapter is concerned? Yes, any doubts you have?
Anyone, any doubts, any question? Now I want to No, tell. sir. Okay. Now I want. There is a time for you on Monday or Tuesday next week. There will be test on chapter number 1, 2, and 3. There will be a test on chapter number 1, 2, and 3. So be prepared for first 3 chapters. Okay. So I will be sharing the notes of again 3 chapters to you. Be prepare yourself for the 3 chapters. Notes are will be with you. Do preparation. Paper कैसा रहेंगे क्या, that will be discussed, that will be shared with you, but be prepared with your test with one. I am sharing you the assignment list of the chapter 1 and 2 and 3 also. I am expecting that you should convert your assignments and upload it on the form. I will be giving you the Google form and you have to upload your assignments continuously. Now I will be giving a deadline to you after this lectures. Okay, there will be official mail to you and there will be notice for you. You have to generate your assignments, you have to create your assignments and you have to submit your assignments to me in an online mode. That will be considered for your evaluation. So are you clear? And be prepared for your test of chapter number 1, 2 and 3. Are you clear, everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so be prepared for chapter 1, 2, 3, and we will be meeting in the next week with your text content. Okay, test के लिए prepare रहो. Okay, you have ample time. कल छुट्टी है, Saturday is there, Sunday is there, and I am expecting ये 3 chapter आपके clear होना ज़रूरी है. Okay, so we'll meet on Monday and be ready. I will be sharing you the content. I will be sharing you the assignment list on chapter 1, 2 and 3. Be prepared and submit it on time. On Monday I am expecting it should be uploaded. No deadline, no more extension. Okay, so we'll stop for the day and we'll meet on Monday. Yes. Yes, sir. Yes. Okay.